Welcome to all of you, my 12th class students, and the chapter electric potential and capacitance. Okay. In our previous video, we discussed on electric potential due to point charge and electric potential due to dipole at axial position and equatorial position. Okay. Now in this video we will discuss the relation between electric field and electric potential. Okay. So what is electric field? Electric field is what? It is the field around the source charge and experienced by any test charge. Okay. Yeah, E equal to F upon Q naught. Here F is the force and Q naught is the what? Test charge. Okay. And what is electric potential? Electric potential is what? It is the amount of work done required to move a unit positive charge from infinity to a particular point. Okay. So what is the relation between this electric field and electric potential? We derive. Okay. Now consider this is a source charge placed at point O. Okay. And due to this source charge there is an electric field exists. So this is the direction of electric field. Okay. This is the direction of electric field. Now I consider two points, two adjacent point or intermediate points between this line A and B, and these 2 points are separated by a very small distance dr. Okay, and dr vector shows the direction of A to B, direction vector from A to B. Okay. Now at point A, suppose the potential is what? VA equal to V. Okay. A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? VA मैंने assume किया है. ठीक है. V equal to what? V. Now at B point the potential is increases, and this potential is what? V plus dV. Okay. जैसे जैसे हम इस सोर्स चार्ज के पास में आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके. ये दोनों पॉइंट इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. पहले V था, अब वो कितना हो गया? V प्लस dV हो गया, because there is some changes in the distance dr. Okay. Now before going to start the derivation, we must write some consideration. So consider the electric field due to charge plus Q at O is E. Okay. Charge Q O पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है. Let A and B 2 points separated by distance dr and assume field almost electric field almost constant and potential is V and V plus del V. दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? V and V plus del V. A पर कितना है? V है, और B पे कितना है? V plus del V. Okay. Now the external force required to move the test charge Q naught against the electric field E vector is F. Is given by F equal to what? Minus Q naught into E. Minus Q naught यहाँ पर क्यों लिखा है? माइनस क्यों लिखा है? Because there is a repulsion force. Okay. So some external force required to against this electric field. Okay. So F equal to what? Minus Q naught into E. Okay. Now the work done to move the test charge from A to B, A से B पर किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक है. वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स कितना है? माइनस क्यू नोट इंटू ई इंटू डी आर. डी आर इज वॉट? डी आर इज द स्मॉल डिस्टेंस. ओके. ये डिस्टेंस की टर्म में वर्क डन हमने निकाला है. ओके. नाउ वन मोर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल.
in terms of potential, we will also write the formula for this. Please write, this is the equation first, okay, and what is the equation second, we will write. Now also the work done in moving the test charge from A to B, okay, A to B, for moving the test charge, work done is what? Charge into potential difference, okay. So what is charge? Charge is Q naught, and potential difference is what? There is a difference between potential of 2 points, VB minus VA, VB minus VA, okay. So what is VB? VB is what? V plus VB, and what is VA? Minus V, because this is the V and this is the VB, okay. So plus V and minus V are cancelled, only Q naught into dV is remaining. So this is the equation number second. From equation first and second we get, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, एंड सेकेंड इक्वेशन इज क्यू नॉट इंटू डी बी. वाई वी do equal these two equations? Because work done is both the equation in the form of work done, okay. So दोनों वर्क डन की टर्म्स में है, तो वर्क डन हमने इक्वल कर दिया. तो यहाँ से E इक्वल टू क्या मिला? माइनस dV बाय dr, ओके, माइनस dV बाय dr. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें ये फॉर्मूला यूज आएगा, ओके. सो E इक्वल टू व्हाट? माइनस dV बाय dr. या आप ये बोल सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. dV बाय dr मीन्स, dV मीन्स potential for small value, and dr is also small distance. So both are this is potential and this is length, so potential per unit length, okay. This is the relation between electric field and electric potential. Please write. So these are the two important point regarding our previous derivation. First is electric field is in that direction in which the electric potential decreases is steepest, okay. Electric field in this direction, okay. So the potential is decreasing, okay. Suppose this is the source charge, okay, and this is the electric field in this direction, okay. So if we move in the direction of electric field, then the electric potential is decreases. If we move in this direction, then the electric field is electric potential is what? Increases, okay. So electric field, please write here electric field. Electric field is in that direction in which the electric potential is steepest, okay, or decreases. And what is the minus sign shows in the formula? Formula is what? E equal to minus dV by dr. Minus sign is also shows that the electric potential is decreases in the direction of electric field, okay. Second, the magnitude of electric field is equal to the change in the magnitude of potential per unit displacement, okay, called potential gradient, normal to the equipotential surface at that given point, ठीक है. जो भी मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके. और ये जो है वो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दैट पॉइंट. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा वो सरफेस के लिए. इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे, ओके. सो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए.